Good morning, ma'am. मेंबर आले. सर हे वापरणार आहे? होय सर, ही स्क्रीन वापरणार आहे? मग बंद करून टाका, फोटो तर चांगले येतील. फोल्ड बिल्ड करायला माप काय दिलेला? मापाने घेतले पण ती तसेच चिवतात, जरा जास्त हे करतात. माझे वर घेतली तर एवढे पट्टा लावायला लागला. क्लास चालू झाले. ते कालचं कॉम्पिटिशन चालू आहे. काल जी कॉम्पिटिशन होती ना, कुठच्या क्लासच्या कॉम्पिटिशन, काल परीक्षा होती त्याचं. हात ठेवायचा पार्ट. स्टुडंट सर्व अनम्यूट करा. नमस्ते मैडम. नमस्ते मैडम. नमस्ते. दक्षा मैडम नमस्ते. नमस्ते मंगला मैडम. नमस्ते. थैंक यू वेरी मच. Yeah, it's my privilege.
Yeah. छान दिसतंय मॅडम. थँक्यू. बेटा थँक्यू. अभिनंदन खापेकर तुला बद्दल मॅडम. असंच छान काम करतात. थँक्यू. नमस्ते बेटा. नमस्ते सर्वांना. मॅडम कुठे गेल्या मॅडम? हे जरा अजून खाली. अरे मी मॅडमला दिसत नाही. आता दिसते. नमस्ते मॅडम. फोटो नाही माझ्याकडे. नमस्ते सर्वांना. कोरे सर थँक्यू तुम्ही आले त्याच्याबद्दल. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. कैसी है तबीयत आपकी अभी? ठीक है अभी पहले से अच्छा है. ज्वाइन कर दो जल्दी हमारे साथ. आ जाएगा. हो जाएगा सर. हेलो. हेलो सर, आप म्यूटेड हैं. अनम्यूट करेंगे प्लीज. यस सर बोलिए. गुड मॉर्निंग. हाँ जी सर, फेसबुक एंड यूट्यूब के ऊपर सेटल हो गया है पूरा. आप ओके, थैंक यू वेरी मच सर. रिकॉर्डिंग भी अलग हो रहा है, तो आपको आप लोगों को रिकॉर्डिंग करने का जरूरत नहीं है सर. मेरा साइड में ही है. 5 मिनट में सर हम शुरू कर देते हैं. अभी 5 मिनट में. बिल्कुल आप लोग 11 बजे डायरेक्ट शुरू कर दीजिएगा सर. सारा सेटअप ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है.
यस सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आदित्य, आपको और निर्मला मैडम, थैंक यू आदित्य, थैंक यू वेरी मच, एनी टाइम मैम, आपके लिए फोन एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग और निर्मला मैडम को तो कैमरा ऑन करो, मैं तुझा कैमरा ऑन करतो। नाही मी सगळंच बंद केलं मुलांचं। निर्मला ना, तुझं नाव निर्मलाच आहे ना? नाही कॅमेरा आहे ना निर्मला? अनम्यूट केलं, अरे अनम्यूट केलं तुला आता। तू परत हे का केलं, बंद केलं? मी करतो ना तुला ते। कापेकर तू दिसते बेटा, हा बघ, कापेकर तू दिसते है। आहे मॅडम, आहे ती। हेलो, हेलो निर्मला तू सुरू कर, मी तुला पिन करून ठेवतो। लावला ना चॅटिंगला? हा पिन केलं निर्मला तुला मी। स्टॉप शेअरिंग। हेलो, दक्षा मैडम। यस सर बोलिए। हाँ सर, अच्छा सर, हमारे जो महाराष्ट्र स्टेट के एडवाइजर जो है सुरेंद्र कुमार अंकल, वो भी ग्रुप मीटिंग में सर प्रेजेंट है। वेलकम सर, वेलकम, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मुग्धा मैडम, यस मॅडम बोलिए। शर्मा सरांना त्यांच्या ईमेल वर परत आपली लिंक पाठवा मॅडम, रात्री पाठवलेलं नाही बेटा, आता त्यांच्या लगेच फोन आला मला, तर जरा परत पाठव। नमस्ते सर मॅडम, हा मॅडम पाठवतात। त्यांचा आता फोन आला ना, त्यांच्या ईमेल वर पाठवा असं त्यांचा मेसेज आहे। सुरेंद्र सर वेलकम, थँक्यू सर। तिला बसवलं इकडे चालेल ना? रमाकांत सर वेलकम। आवड सर मॅडम, रमाकांत सरांना वेलकम केला सर। मॅडम बोलतात तुला। मी आता दक्ष बेनला फोन काढला होता। बेन नमस्ते, केम छो बेन? आपके आशीर्वाद की जरूरत है बेन। हमेशा है बेटा तुम्हारे साथ। है मैडम, बात होना बहुत जरूरी था। अभी मैंने फोन नहीं करा था आपको, फोन करने के लिए आज करता। बेन तुमची तब्येत कशी आहे? आम्ही येऊ शकतो का घरी? नाही अजून मी क्वारंटाईन आहे बेटा। अच्छा क्वारंटाईनच आहे अजून? मी मेसेज पण केला होता येऊ का म्हणून। आता नाही, मी सांगणार, समोरून सांगणार तुम्हाला। हाँ चालेल मैडम, काळजी घ्या। मैडम महीना तक आप बताते नहीं है, लास्ट टाइम में हमने पूछा था आपको, 1 महीना तक आपने बोला नहीं। नहीं अभी बोलूंगी, अभी क्वारंटाइन खत्म होगा बाद में बोलूंगी पक्का। बेन हम फोन भी नहीं करते क्योंकि आप बिजी रहते हैं, आपको आराम की जरूरत है, इसके लिए फोन नहीं करते, इसलिए व्हाट्सएप पे बोलते हैं मैडम। हो थँक्यू बेटा, थँक्यू, काळजी घ्या सगळ्यांना। नक्की मॅडम, तुमचा आशीर्वाद राहू द्या। आपला हा कार्यक्रम झाल्यानंतर परत आम्ही सांगूच तुम्हाला काय आहे काय नाही। ओके बहीण, मंजू आंटी वेलकम। मंजू आंटी वेलकम मैम। नमस्कार। मुग्धा मैडम नमस्ते सर, शिवणेकर सर नमस्ते। नमस्ते। थँक्यू सर।
याचं काय माईक काही आहे का वायर वेळ काय लावायला मी बघतो ब्लूटूथ करेक्ट प्रॉपर आहे का त्यांना जे दाखवायचं ते दिसतंय. त्यांनी केलं मंजू आंटी वेलकम. ते लोक सरकवतात ते मेन दाखवायचं. तेच मी करतोय पण ते पण ऐकलं ना वायर म्हणलं काहीतरी लावली म्हणजे काय होईल आपल्याला म्हणजे आवाज कमी येतो म्हणून म्हणतात. आपल्याला काय कम्युनिकेशन चाललंय ते माहिती नाही नाही आपला सर मुंडे मॅम सर, बोले आपला जे स्पीकर आहे ना हा ते स्पीकर वर तुम्ही जाणार ना हा तिकडे त्याच्यात खाली मिक्सचर असं लिहिलेलं आहे. ओके हा त्या मिक्सचरला क्लिक करा तुम्ही हा 100% येते. आणि त्याच्यात आहे ना सगळे स्पीकर येतात. झूमच्या स्पीकर आहे सगळे स्पीकर त्या सगळ्यांना 100 वर करून टाका म्हणजे आवाज व्यवस्थित येणार तुमचा. येस मॅम येस मॅम Can you hear me, Mugdha? येस मॅम Can you hear me? Yes sir, welcome sir. Can you hear me? Yes sir, we can hear you. Welcome Sharma sir, welcome. Namaskar. Namaskar. Greetings to you. Thank you very much sir. निर्मला रेडी आहे रेडी. आता तुमचा कार्यक्रम सुरू करायचा. छापेका शुरू कर बेटा. हा ठीक आहे स्वागत स्वागतम 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 हुआ आपका आगमन Are you, आपके स्वागत से are you able to see me properly? Yes sir, yes we can see you sir. Okay, all right. Thank you. Thank you sir. आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आदरणीय परम पूज्य ताराबाई को कोटि कोटि विनम्र अभिवादन। जैसे रोशनी होती है दीपक से वैसा सब में आप जोश भर दो। पावन किया दरबार को आपने दीप जला आगाज कर दो। तो प्रस्तुत है दीप प्रज्वलन। इसी के साथ मैं दीप प्रज्वलित करने आमंत्रित करती हूँ हमारी पाठशाला की माननीय ज्येष्ठ शिक्षिका श्रीमती सुचित्रा कांबळे जी तथा सभी शिक्षकगण। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनम दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। हे दीप ज्योति आप परम ब्रह्म स्वरूप है। हे दीप आपकी ज्योति जन का पालन करने वाली है। हे दीप आप मेरे पापों का हरण करें। हे दीप मैं आपको और आपकी पवित्र ज्योति को नमन करते हुए आपकी स्तुति करती हूँ। मागच्या सभी को धन्यवाद और उन्हें मैं आसनस्थ होने की विनंती करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
सम्माननीय श्री प्रोफेसर MM शर्मा जी, शिशु विहार मंडल के सभी माननीय पदाधिकारी, विभिन्न विभाग के विभाग प्रमुख, पाठशाला की माननीय श्रीमती दक्षाबेन शिरोडा जी, ज्येष्ठ शिक्षिका श्रीमती सुचित्रा कांबळे जी, उपक्रम के मार्गदर्शक आदरणीय श्रीमान डॉक्टर लक्ष्मण शिंदेकर जी तथा उनकी पत्नी आदरणीय श्रीमती वसुंधरा शिंदेकर जी, आदरणीय आमंत्रित सभी मान्यवर, प्रकल्प के सभी परीक्षक, पाठशाला के शिक्षक तथा मार्गदर्शक शिक्षक और मेरे अन्य वैज्ञानिक छात्र, आपका पुनः हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज परम पूज्य ताराबाई मोडक बाल वैज्ञानिक पुरस्कार वितरण समारोह का आरंभ होने जा रहा है। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम ईश्वर के पूजन से करते हैं, ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति है और इसी परंपरा के अनुसार हमारी पाठशाला के संगीत शिक्षक श्रीमान अभिजीत गोरे सर स्वागत करने जा रहे हैं। स्वागत के बोल है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू मंत्र आहे हा स्वागताचा सोहळा, हा स्वागताचा सोहळा। प्रस्तुत है स्वागत में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु मंत्र आहे आगळा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु मंत्र आहे आगळा, हा स्वागताचा सोहळा, स्वागताचा सोहळा, स्वागताचा सोहळा, स्वागताचा सोहळा। अमृताच्या या क्षणाने मोहरावी फुलपाने, अमृताच्या या क्षणाने मोहरावी फुलपाने, या सुगंधी संस्कृतीचा, या सुगंधी संस्कृतीचा श्वास व्हावा मोकळा, स्वागताचा सोहळा, स्वागताचा सोहळा। ज्ञान हा ठेवा सुखाचा, ज्ञान हा मनाचा, ज्ञान हा ठेवा सुखाचा, सुखतेचा नम्रतेचा, सुखतेचा नम्रतेचा कौल आहे आगळा, स्वागताचा सोहळा, स्वागताचा सोहळा। ज्ञानरूपी दुःख आले, एक ठाई एक झाले, ज्ञानरूपी दुःख आले, एक ठाई एक झाले, ते इथे साकार झाले, ते इथे साकार झाले, बंधुताच्या भावना, स्वागताचा सोहळा, स्वागताचा सोहळा। भूमी माता धन्यतेची टिळक गाथा, ही कलेची भूमी माता धन्यतेची टिळक गाथा, सज्जनाच्या दर्शनाला, सज्जनाच्या दर्शनाला सुजन आहे थांबला, स्वागताचा सोहळा,
धन्यवाद कोरे सर। हमारे हिंदुस्तान में आर्यभट्ट, चंद्रशेखर और वेंकट रमन जैसे कई महान वैज्ञानिक पैदा हुए। विज्ञान के क्षेत्र में इन वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया में भारत देश का नाम रोशन किया। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विज्ञान के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक खोज पैदा करने के उद्देश्य से पूरे देश में 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन के उपलक्ष्य पर हर साल परम पूज्य ताराबाई मोडक बाल वैज्ञानिक पुरस्कार समारोह मनाते हैं। ज्ञान इस मर्यादित उद्देश्य को सीमित न रखते हुए स्वतंत्र विचार करना, निरीक्षण, वाचन एवं स्वानुभव द्वारा खुद को अभिव्यक्त करना, इस दृष्टि से छात्रों को बढ़ावा देने हेतु ताराबाई मोडक बाल वैज्ञानिक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाता है। आज के इस कार्यक्रम के स्वागत तथा प्रास्ताविक के लिए हमारी पाठशाला मुग्धा तुझा आवाज येत नाही। हॅलो, आता येते मॅडम? हॅलो, हाँ आता है। Namaskar. Good morning to each one of you present today. Today we have Honorable Professor M.M. Sharma as our chief guest. It is an honor for me to welcome Professor M.M. Sharma on behalf of the Shishuvihar institution and our beloved principal, Honorable Dakshaben Chitroda. It is pleasure for me to welcome all dignitaries and esteemed guests. On behalf of the institution and school, I offer my regards to all judges and all teachers. I welcome all the winners and participant students in this program. We gathered here for the prize distribution ceremony of 10th Tarabai Modak Balvaidnyanik Puraskar. When we start this program or activity, the initiative was launched with the aim of enhancing students for observation, creating interest in science, making ingenious use of available resources, and to make a forum available to students to exhibit their creativity and innovativeness. This is the 10th years of the program, and we are happy to say every year the numbers of participant schools, students are increasing. So thank you to all of you. Again, I bid very warm welcome all of you. Thank you. धन्यवाद मुग्धा जी। याद आते हैं वो पल जब शुरू हुआ था बाल वैज्ञानिक का सफर। याद आते हैं वो पल जब शुरू हुआ था बाल वैज्ञानिक का सफर। झलक उन क्षणों की फिर से जगाए दिल में नई उमंग। झलक उन क्षणों की फिर से जगाए दिल में नई उमंग। परम पूज्य ताराबाई मोडक बाल वैज्ञानिक कार्यक्रम के उपलक्ष्य हेतु इस कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अब तक की यादें पीपीटी के माध्यम से पेश करने जा रहे हैं हमारे पाठशाला के श्रीमान मुंडे सर। थैंक यू मैडम। Thank you, Nirmala. Honorable Chief Guest, our Principal, Dakshaben, our judges, teachers, parents, and our small upcoming scientists. Welcome to all our today's program, Padmabhushan Tarabai Modak Balvaidnyanik Puraskar 2021-22. I am going to review all the programs in short. Before starting this review, I would like to say thank you very much our principal Dakshaben, because she has started this program on 2012-13 to identify small scientists from the standard of 7th and 9th classes from our school and nearby schools.
It's really difficult task, but with the guidance of Madam Daksha Ben and our smart teachers started this work from 2012-13, and the topic of the first year is fossil energy and non-conventional energy, and the chief guest of the program is one and only Dr. Anil Kakodkar sir. Sir appreciate our students and teachers to give us wishes for further programs. And next one, 2013 and 14, the topic is different type of the energy and renewable resources of energy, and the chief guest of this program was Chancellor of Mumbai University, Dr. Balchandra Mungekar sir. 2014 and 15, the topic of this action research was air and weather, and the chief guest was Dr. Vijaya Ward, Madam. Madam enjoyed our students' experiment and guided to them. So we are really enjoying this program. And the next one, 2015 and 16, the topic is air and the weather based on the science, and the chief guest of Dr. B.B. Singh sir. He is also working as a senior scientist in BARC. Next one is 2016-17, environment which is useful for daily life. And the chief guest of this program is Dr. Kumar Apte sir. He is a senior scientist of BARC. He has guided our small scientists, and the students are also enjoying this program. Next one, 2017-2018, the topic is the same, environment which is useful for daily life, and the chief guest was the Jestraj Joshi sir. He is working in Marathi Vigyan Parishad, and he enjoy this program and guided our students of different scientific exam, and also guided to the students of action research report. Next one is 2018 and 19, the plastic one is a plastic one hazardous to living world. This is a very important topic, and our students are making a lot of the experiment of this topic. And that time, the chief guest of this program was Dr. Sharad Kale sir. He has also enjoyed this year's program, and the students made different models, and they guided to the students also. Next one is 2019-2020, weather and health. This is we are also faced this 1920 because after in March, the lockdown and a lot of the obstacles are also we are facing at that time. But this year we are also presented the program offline, and this year our chief guest is Ganpati Yadav sir. He is a vice chancellor of ICT, and he guided our students and also informed to us that you can come and visit our institute, and we will show different type of the instruments and projects to our students. So our students are really got lot of the information from Ganpati Yadav sir. Next one, we know that in 2020-21, the corona arrived with us, and we are all of us, we are stuck down at home. So our principal madam decided this program will be online because we are stuck at home and all the work is going on online. Student made we are given the topics to students and different schools. We send the prospect of this program, and a lot of the students and schools are also participate in this activity, and we did this program very well last year too. And that time the topic is air and health, and the chief guest was Kisan SS. He is a short film director, and his name is also including in the Guinness Book of World Record. He also appreciate to us, and he also appreciate to us
our students, because he appreciate for the you are yet, so you all of us are stuck at home and you are doing lot of the energy, and your students are also doing best action research report and experiments. So our students are doing last year also very good job. So thank you all of you. And this year on 2021, the topic is environment and ecosystem. We wanted to release the lockdown, but nowadays we are also some of the limitation of this coronavirus. So in this year we are also present this program online mode, and we are really very thankful, Daksha Ben. We would get a very excellent chief guest. He is a Padmabhushan and Padmabhushan award winner personality, one and only Professor M.M. Sharma sir. I thank you and welcome sir, and all the teachers of you, and I have got this opportunity to review our program. Wish you all the best. Thank you very much, Nirmala madam. हाँ सर, यस, धन्यवाद मुंडे सर. सर आवाज आ रही है ना? धन्यवाद सर. हाँ, आता. ओके. कुछ लोग प्रेरणा होते हैं, कुछ लोग आदर्श होते हैं. कुछ लोग प्रेरणा होते हैं, कुछ लोग आदर्श होते हैं. बड़े खुशियों से भरे दिन होते हैं जब आप जैसे खास लोग पधारते हैं. बड़े खुशियों से भरे दिन होते हैं जब आप जैसे खास लोग पधारते हैं. ऐसे ही खास मेहमान आज के इस अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रोफेसर M.M. शर्मा जी. इनका परिचय करने आ रही है हमारी पाठशाला की शिक्षिका श्रीमती मुग्धा घोगड़े जी. Thank you. I am profoundly delighted to take an opportunity to introduce the chief guest, Honorable Professor M.M. Sharma. He is an Indian chemical engineer. At the age of 27 years, he was appointed Professor of Chemical Engineering in the Institute of Chemical Technology in Mumbai. He later went on to become the director of Institution of Chemical Technology, the first chemical engineering professor to do so from ICT. In 1990, he became the first Indian engineer to be elected as a fellow of Royal Society in UK. Professor Sharma is a recipient of number of prestigious academic honors and awards. He was awarded the Padmabhushan in 1987 and Padmabhushan in 2001 by the President of India. He has also been awarded the Labour Room Medal of the Royal Society, the S.S. Bhatnagar Prize in Engineering Science in 1973, FICCI Award in 1981, the Vishwakarma Medal of the Indian National Science Academy in 1985, GM Modi Award in 1991, Meghnad Shah Medal in 1994. He obtained PhD in Chemical Engineering in 1964 at Cambridge University. He served as Director UT City, now known as Institute of Chemical Technology, for 33 years. He has published many papers in various reputed journals. He has contributed extensively on the role of microphase in multiple reactions, which he pioneered. He also became an independent editor of chemical engineering science at a young age. He has held various positions in many organizations, and such a phenomenal person is today with us as a chief guest. Thank you, sir, for sharing your valuable time with us, and we request you please accept our token of love here. Here is a memento we are share on screen. Thank you, sir. Yes, Nirmala ma'am, carry on. हाँ, यस, धन्यवाद मुग्धा जी. आज के इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक आदरणीय श्रीमान डॉक्टर शिवणेकर सर, इन्हें मैं विनती करती हूँ कि वे हमें
मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्रीमान डॉक्टर शिवनेकर सर। And ओके सर। Honorable Chief Guest, Padmabhushan Tarabai and teachers, headmasters, students, parents, and friends. It is a great pleasure to witness this program, which is conducted for the last 10 years. Now, we are facing the corona, but still the students are enthusiastic and they are very much interested in science, especially knowing the things unknown. And therefore, it gives inspiration to the teachers also and the people like us, because small kids, they are much more interested in knowing the universe. And the teachers are equally interested in motivating them and working with them throughout the year. It is not one day job. It is not one day workshop. But the whole year, they are busy with experiments, with experiences, doing things, collecting information, analyzing, and interpreting. And they want to convey something which comes out of this whole process. And therefore, I appreciate their intense work, and I wish them all the best in future. Thank you. धन्यवाद शिवनेकर सर जी। अगेन, मुस्कान हमारी आपके लिए वरदान है। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए, रब हम पर मेहरबान आए हैं। आप आए, रब हम पर मेहरबान है। बड़े नसीबों वाले हैं हम जो आप हमारे मेहमान हैं। बड़े नसीबों वाले हैं हम जो आप हमारे मेहमान हैं। आज उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान प्रोफेसर MM शर्मा जी से मैं गुजारिश करती हूँ कि वे हमें अपने बहुमोल विचारों से हमारे छात्रों को लाभान्वित करें। आदरणीय श्रीमान प्रोफेसर MM शर्मा जी। Thank you. First of all, let me greet all the prize winners. Also express my greetings to your school, which is imparting high quality education. I'm delighted to be with you this morning because science is an excitement. Science is an adventure. Even the amendment to Indian Constitution in 1976 referred to development of scientific temper. Now, you said many of your programs were connected, awards were connected with the theme of air, health, and all. I'll try and explain to you how high science is relevant to our daily life and how our lives have been made healthier and pleasurable. Everybody is making a reference to COVID, item of health. But I want you to appreciate that when we first came out with vaccines and eradicated smallpox from the globe, high science eradicated polio from the globe. Vaccines which are administered after a child is born. What a great benefit it bestows.
if you look into the development of vaccines, you will realize how biological sciences and chemical sciences matter. In the most recent past, for COVID, I want to remind you that it wasn't long ago, just 4 or 5 years ago even, it took easily 5 years to develop a vaccine for Ebola and all. And look at the advances in sciences that within a year, number of vaccines have come in the market, and you keep on hearing the new methods, including the latest nasal spray-based vaccine. Just imagine for yourself how vaccines have been so very helpful in keeping us healthy and make sure that we are not attacked by undesirable healthy undesirable diseases. Let me also explain to you how high science makes a world of difference to us. And I want to excite these young students who are award winners that, you know, science, when I said in the beginning, excitement, adventure, even today, I'm enjoying this excitement. I read scientific topics every day without fail. This is the habit I would like all these young award winners to cultivate, that it's not a one-time activity. You won the award, that should act as a booster. There was also a reference made to our air, water. I want to explain to you that how ancient interest in astronomy, please don't mix it with astrology. I'm talking of astronomy. Indians were very good in astronomy. In fact, the Global Astronomy Association has even named comet after one of our great astronomers. And we have a place in Pune where UGC's Inter-University Center is established. We have a giant telescope. It was the study in astronomy which has enabled us today to do weather forecasting. Now you realize how important is weather forecasting. It's a pretty high science. It is quite complicated. It's not easy to predict. Now we are able to predict typhoons, cyclones, intense rains, but still science is found wanting in ability to predict earthquakes. We are able to show places which are earthquake prone, but we are still not able to predict that tomorrow or day after tomorrow or in a week's time you will get an earthquake. You can only say you are earthquake. So science still has many problems to solve, and like new diseases keep on coming, varieties of cancers keep on coming. Reference to health. Now, what has been major contributions? Now, first of all, medicines. You have depression, there is a drug which will get you over depression. If you have a low hemoglobin, you have medicine that will boost the hemoglobin, and whole range of problems that the human body may face today, whether it's blood pressure, whether it is sugar. But I want to tell you something more about diagnostics. How science has made such an extraordinary effect. Please bear in mind that major breakthroughs have come through what we call blue sky research. You do that research for excitement, for adventure, and then don't bother about the use. The use comes automatically if it is a very good science, whether it has happened for LED. Now you take your example of a mobile phone. You realize that many of you were not born when it was hard to get a landline. I remember how in late 60s, early 70s, I was able to get a landline because I happened to be a member of many government committees.
Today, nobody is bothered about landline. But look at the high science that goes into the mobile phone, the engineering plastic, the LED, everything in a mobile phone is high science. And satellites, it is the satellites which are allowing bank transfer to remotest location in the country, how poor people in remote villages benefit. This is a gift of science to make our daily life easier. Now, I was referring to diagnostics. When X-ray came, the invention of X-ray was out of curiosity. It is curiosity, whether when Raman got Nobel Prize, it was this curiosity, blue sky and all, and with very simple instrument he was. And that Raman effect continues to be used even today for security purposes. So look at what X-ray did. Every villager knew photo nikalo. Now you forget about X-ray, but today everybody knows MRI. But please keep in mind that MRI arose out of outstanding work of chemists and physicists for what was called magnetic resonance imaging. Nuclear magnetic resonance. Nuclear magnetic resonance. And doctors didn't want to use the word nuclear, so they simply call it MRI. And you are able to detect so many. So diagnostics, all types of diagnostics are a result of pursuit in science. It is the pursuit in science that has enabled our whether sugar measurement or whether. Now imagine, we want to know the flow of blood into the heart by non-invasive method. Now a benign radioisotope injected, and with the software, you get straight away output of what is the percentage of the blood flow in relation to what is an ideal rate of blood flow. Imagine what a major breakthrough. So one of the great output out of nuclear program was this whole range of radioisotopes and the use of radioisotopes for varieties of purposes. Let me give you one very simple example. I have a long pipeline and I want to know the flow. All I need is a counter, put an isotope, radioisotope at one end, and at the other end, whichever end I want to choose, count. I know how much I have dosed, so I can work out what has been the flow rate. So like this, science is a borderless activity. Science means that you dedicate yourself to the frontiers. Don't bother about the utility of good science that we are doing. I've explained to you all these which have, now take lasers. When physicists discovered lasers, would you imagine now lasers are used even for treatment of tuberculosis? Lasers are used in, of course, research, everybody knows. But what most people do not know, or perhaps know, but not realize the impact of this great science, that in the backyards of Gujarat, Rajasthan, artisans are cutting diamonds, rough diamonds through lasers. They may know nothing about how lasers were invented, but they know how to use the lasers. Now look at the use of lasers for such a simple thing, which was otherwise long duration, very arduous work to cut diamonds, and with lasers you are able to do in such a facile way. Like that, you can keep on giving examples after examples to show how science helps us. Now let's talk about whole field of agriculture. The world would have died, many people in the world would have died of hunger unless we had ammonia. And it was Haber
in 1910 who came out with this wonderful process, which we considered as the greatest innovation in the history of chemical industry. Imagine if synthetic ammonia had not come, what would have been the fate of agriculture production through use of fertilizer in the form of urea, ammonium sulfate, ammonium nitrate, and whatnot. But what did he do? One of the facets of or requirements of science is that you must have patience. And two, you should not be disappointed with the kind of negative results you might or failures you might have. Failures are harbingers of success. I want to tell the young award winners that whatever you are pursuing, if you find some failure, don't get disheartened. I can give you many examples from the world where failures became harbingers of success. So you must. Unfortunately, in our society, we don't have culture of owning failures. And this is one of the reasons the inventive skills of we people in India has not come out, but they get expressed in Silicon Valley in America. Look at the triumph of Americans, Indians in America in every field. We need to develop that kind of culture in India that we own failures. We prop up. Science is not driven by hierarchy. You have to leave people who have novel ideas and appreciate, and don't say that you are junior or you are. In the world of science, there is nothing like junior or senior. This is another problem of our culture in our country, where you will often find doctors saying, oh, that fellow is a junior chap. Normally, we scientists, we academic persons don't talk about this person being junior and all that. So in agriculture, I refer to, but more important thing came through genetics. Those of you who are interested in biological sciences, and I urge you that this is the frontier area, biological sciences, which have very close link with chemical sciences. It was Mandel's work on genetics. Remember, when he came out with the plant breeding hypothesis or theory and then practice, how the world has changed in agriculture. India itself benefited when we used to have begging ball in early 50s and all. We used to import wheat in India. What a shame it was for a country like us that we were importing wheat, and that variety of wheat did not suit the taste of Indians. And it was the hybrid wheat, the plant breeding practice, again based on very good science. But closer to me in my area, I want to explain to you something by dramatizing. Now, when you grow rice, it is often a flooded field. Now, along with the rice plant, you get herbs or weeds, which the naked eye cannot distinguish between the main plant and the weed or the herb. Now, chemicals have eyes. They can make a clear distinction between weed, herb, and the main plant. And with advances in sciences, today we are able to use some few grams, few tens of grams per hectare to systematically eliminate weeds and herbs. Please bear in mind that it's very difficult, even if you had all the labor, to get rid of these in flooded fields. And in any case, during the right time when these need to be removed, and they take up the fertilizer in an aggressive way, much more than the main plant. So the weed grows and the plant doesn't benefit from the fertilizers that you feed, but chemicals can do this job. And you all know that whatever we buy in the market, whether you buy an apple, if you see an apple's cap, that means there was a fungal attack. And how chemicals are able to. Now you mentioned during your various years of award
you also had something to do about plastic. But how plastics have revolutionized our daily life. You pick up a toothbrush in the morning that is made, both the handle as well as bristles are plastic. It doesn't give way. You can use it for years if you are careful. Everything during the day, you find it is the gift of the science of polymers that makes us mobile, gives us films. Now people, if they abuse the use of this and then you blame the plastic for it, it is not fair. Our habits are bad that we will throw away and not collect it properly. Polymers are made now, but you leave out packaging material. But I want to tell you, if polyester had not come, what would have happened to the economically weak persons, their ladies wearing sari? Cotton saris are expensive, difficult to maintain, need lot of water for cleaning, need lot of time for drying, whereas polyester sari is very light. You can print in varieties of colors. Today, you will not see any person, any of the maids that come home who do not wear a good sari. Now, this is entirely because it came through wonders of chemical sciences, through polymers. And polymers made such a big difference. But many times people don't realize that even sports get very heavily influenced. And I always quote the example of table tennis ball, the tennis racket, that how light is a tennis racket and how strong, or badminton racket. In Britain, there used to be, displays during events or sports. Imagine if we were not there, showing that how important the plastics have been. Now, even a thing like leather, when you wear, you don't realize that how coating of polymers in terms of what we call urethanes have. You see your foam plus urethane foams, U foams, and U stands for urethane foam. So in the entire range of our activities, you will science is pervasive. Science is highly pervasive. Science makes a world of difference. Let me give you one or two hilarious examples. That when the science of DNA came, which fetched Nobel Prize, little did people know that it will be used at airports to check identity. Heathrow Airport in UK was the first one in the world which started using the DNA profiling to find out the parentage of the person, whether the person they brought was his or her child or it was fake one. And how science communication makes a lot of difference. And I would pay tribute to the Indian television systems, how they have advertised the wonders of science in terms of family planning, in terms of the pill. It's a very, very great innovation, that how family planning has been so greatly influenced by that benign pill. But imagine in the TV serials, you will find on and off a statement, "Baap kaun hai? DNA nikalo." So everybody in the society today knows what is DNA. But go back to the rigors of science that allowed DNA profiling to be done. And our first DNA profiling center was created in Hyderabad through Department of Biotechnology. I had something to do with the establishment of that center. So I can go on and on. My clear message is science, pursuit of science is also a cultural activity. Science means that you do things in a logical way. So one or two examples I'll give you. In our society, they will say this girl is Mangalik. So there are all kinds of things
which are, attributed to this. But Mangalyaan space program has shown. Similarly, eclipse. We all know what is eclipse. And yet, look at the kind of andhavishwas that we have with. When people used to get epileptic attack, they used to say Devi aayi hai. Now we know the real science of why you get epilepsy, how it is a neuro disease, and how it can be cured, and how you can keep this under control. If a person is bipolar, again, all kinds of attributes are made in the society. In earlier days, even smallpox, they used to say Mataji aayi hai. So they won't treat. Now, of course, you are eradicated because the scientists brought vaccine. So once again, congratulations to the young students who have won prize. I want to encourage them that pursue the career in science as you grow, and practice science and don't deviate from science, because science is inseparable from everyday life. Greetings to your school again, and greetings and all the best wishes to the award winners. Thank you. थैंक यू सो मच सर। आज के इस बाल वैज्ञानिक उपक्रम में आदरणीय श्रीयुत सर ने बहुत ही मौल्यवान हमें मार्गदर्शन किया है। बाल वैज्ञानिक जैसे कई उपक्रम हैं, इनके माध्यम से हम विज्ञान में नई खोज कर सकते हैं और किसी भी परिस्थिति पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसके बारे में उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं, जैसे वैक्सीन के बारे में बताया, बायोलॉजिकल फार्मिंग के बारे में बताया है, प्लास्टिक, स्पेस, डीएनए, इन सब के बारे में हमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तथा उनको बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश भी दिया है उन्होंने होनी आवश्यक Is some problem in the audio system? है। संदेश आज के मेहमान इन्होंने हमें दिया है। धन्यवाद सर। फिर से एक बार जो मैंने लास्ट लाइन बोला था कि बड़े नसीबों वाले हैं हम जो What is the problem with the audio system? आप हमारे मेहमान हैं सर। थैंक यू सो मच। आपको पूछे, किसी को अगर प्रश्न पूछना है तो आप आदरणीय सर से प्रश्न पूछ सकते हैं। छात्र कोई बाल वैज्ञानिक है, किसी को अगर कोई प्रश्न है तो आप है आपको। मुझे लगता है सारे प्रश्नों के सर ने बहुत अच्छी तरह से उत्तर दे दिए हैं इस टाइम। हमारा आगे का कार्यक्रम है का विकास। There is something wrong with the audio system. Yes, sir. There are frequent disruptions in your speech. Hello, sir. खापेकर, तुझा आवाज मध्ये प्रॉब्लेम येते बेटा। हॅलो हॅलो, हो चालेल। मुग्धा मॅडमला प्रश्न विचारायचा जरा थांबा। बेन आवाज येतो? आता मॅडम विचारू? हा बेटा विचार। विचार बेटा। सर, कोरोना काल में कोई कहते हैं कि वैक्सीन परिणामकारक होता है,
और कोई लोग कहते हैं कि नहीं होता है, तो हम लोग जैसे विद्यार्थियों ने क्या समझना चाहिए? देखिए, वैक्सीन का असर तो शर्तिया हो रहा है, पर वैक्सीन होने के उपरांत भी आ सकता है, कठिनाई आ सकती है, मगर उस कठिनाई कमजोर होगी। लोगों ने जो बूस्टर डोज के बाद भी किसी को कोरोना हुआ है, पर उसका असर बहुत कम था। अगर आप वैक्सीन नहीं लेंगे तो आपको भयंकर प्रॉब्लम आ सकती है। तो वैक्सीन, अब जैसे स्मॉल पॉक्स आप देखो ना, स्मॉल पॉक्स आता है किसी को नहीं आता है, पोलियो आता है किसी को, कहाँ आता है? वैक्सीन जो बराबर देते हैं ना, तो वैक्सीन का असर तो शर्तिया होता है। अब ये अभी तक इतनी एडवांस नहीं हुई है वैक्सीनोलॉजी, जिससे कह सकते हैं 100% आपको कुछ नहीं होएगा, ऐसा नहीं हुआ है। पर जब वैक्सीन से एकदम अच्छा फायदा होएगा उसमें कोई संदेह नहीं, उसमें कोई संदेह नहीं। पर कहना कि किसी हालत में आपको कोरोना नहीं आएगा, ऐसा नहीं कह सकते, कोई कहता भी नहीं। वो कहते हैं 80%, 90%। पर अगर आप वैक्सीन नहीं लोगे ना, तो बहुत कठिनाई आ सकती है। तो वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है, कंपल्सरी है। बच्चों को पैदा होती वैक्सीन देते हैं ना आजकल, 3 तरह की वैक्सीन देते हैं ना। देखिए, जैसे अभी एक वैक्सीन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई है, वो टीबी की, जो बीसीजी देते हैं उसका असर नहीं होता है। अभी इसकी शोध चल रही है, जिस दिन टीबी की वैक्सीन आ जाएगी तो इंडिया में कितने ज्यादा टीबी पेशेंट्स हैं, तो टीबी निकल जाएगी। पर उसकी शोध करना बहुत बहुत कठिन है, चल रही है, बहुत काम चल रहा है। मलेरिया का भी वैसा ही है, मलेरिया की कुछ वैक्सीन है भाई, इतने तरह की मलेरिया है कि सब तरह के मलेरिया वैक्सीन से छुटकारा नहीं मिलता है, पर उस पर भी शोध चल रही है। ये चैलेंजेस है साइंटिस्ट को, come out with 100% proof vaccines for TB, for malaria, for COVID. कोविड में भी कितना परिवर्तन होता रहता है ना। देखो, जो म्यूटेशंस होता है वायरस में, वायरस होती है प्रोटीन, वायरस में जितने वेरिएशंस होते हैं वो अभी भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। देखो, नए नए वेरिएंट्स आए ना, कोविड के नए वायरस के नए नए वेरिएंट्स आए ना, कोई बता नहीं सका एडवांस में कि ऐसा ऐसा वेरिएंट, कहते आ सकता है, मगर शर्तियां नहीं कह सकते और किस तरह का आएगा। पर साइंस उसका जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकती है, तो उसके लिए तुरंत जो वैक्सीन में मॉडिफिकेशन चाहिए वो करते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। और किसी को प्रश्न पूछना है? सभी स्कूल के बच्चे यहाँ पर हैं। अभी आपको किसी को प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। शिशु विहार के बच्चों के कला गुणों का विकास, शिशु विहार के बच्चों के कला गुणों का विकास, यही आईना है हस्तपुस्तिका का आविष्कार। यही आईना है हस्तपुस्तिका का आविष्कार। हस्तपुस्तिका का निर्माण किया जाता है। यह हस्तपुस्तिका हमारी पाठशाला के सर खापेकरचा आवाज अजिबात येत नाही। हॅलो, आवाज नाही येत मॅडम? बेटा कट होते तुझा आवाज। मॅडम आवाज आ रही है? दक्षा मॅडम आवाज येतोय? आता येते। ओके ओके, ठीक है। शिशु विहार के बच्चों के कला गुणों का विकास, खापेकर तू जागा बदल बेटा, आवाज शिशु विहार के बच्चों के कला आविष्कार। आवाज नाही येत आहे? खूप कट होते तुझा आवाज।
आवाज येत नाही. मॅडम आता येतोय आवाज? हो हो. ओके, धन्यवाद खापेकर मॅडम. हा बोला, आवाज येतोय सर? यस यस. परम पूज्य ताराताई की स्मृतियों को विनम्र अभिवादन. आज के बाल वैज्ञानिक कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि सम्माननीय श्रीयुत प्रोफेसर जी MS शर्मा सर, हमारी शिशु विहार मंडल के सभी आदरणीय सदस्य, हमारे स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा श्रीमती दक्षाबेन चित्रोड़ा जी तथा उपस्थित सारे आदरणीय मान्यवर, आप सभी को मेरा शतशः वंदन. बाल वैज्ञानिक कार्यक्रम के दरमियान हर साल हम हमारी पाठशाला की हस्त पुस्तिका प्रकाशित करते हैं. इस हस्त पुस्तिका में बच्चों के सुप्त गुणों का विकास किस तरह से हो सके, इसके बारे में सोचा जाता है. बच्चों द्वारा लिखित कविताएं, स्वरचित लेख और बच्चों के द्वारा निर्मित सुंदर सुंदर चित्रों का वर्णन और सुंदर सुंदर चित्र उसमें हम लगाते हैं और इन सबको इकट्ठा करके हस्त पुस्तिका बनाई जाती है. तो इस साल बच्चों ने सुंदर हस्त पुस्तिका तैयार की है. उनमें उन्होंने 2 साल से चल रही कोरोना महामारी के बारे में बहुत सुंदर सुंदर लेख लिखे हैं. इतना ही नहीं, तो उसमें बच्चों ने आप बीती भी लिखी है. कोरोना बीमारी के कारण किस तरह से हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में बच्चों ने बहुत अच्छी ढंग से लिखा गया है. उनके स्वानुभव उसमें उन्होंने लिखे हैं. तो इस तरह बच्चों के सुप्त गुणों का विकास करने के हेतु यह हस्तपुस्तिका हर साल हमारे स्कूल में बच्चों द्वारा बनाई जाती है और इसका अनावरण किसी बाल वैज्ञानिक प्रोग्राम के बख्शीश वितरण समारोह के दौरान किया जाता है. लेकिन पिछले 2 साल से चल रही कोरोना बीमारी और महामारी के कारण हमारा जो प्रोग्राम है वो तो ऑनलाइन ही हो रहा है. इसीलिए हम इस साल इस हस्त पुस्तिका का अनावरण हमारे प्रमुख अतिथि के शुभकर कमलों से नहीं कर सकते, लेकिन उनके आशीर्वाद से और उनकी अनुमति से इसका अनावरण हम जरूर करेंगे. अब सर जी आप यहाँ उपस्थित नहीं हैं और उसी के कारण हमारे स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा दक्षाबेन चित्रोड़ा जी यहाँ उपस्थित नहीं है. लेकिन इन सब के पीछे यहाँ उपस्थित नहीं है, ऑनलाइन हमारी प्रिंसिपल साहिबा उपस्थित है. अभी आपकी अनुपस्थिति में इसका अनावरण हमारे दक्षाबेन चित्रोड़ा जी के शुभ कमलों से, शुभ हस्ते होना चाहिए था, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक ना होने के कारण उनका आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार हमारे साथ है. इसीलिए मैं आपसे प्रमुख अतिथि जी और हमारी प्रिंसिपल साहिबा के परमिशन से इस हस्त पुस्तिका का उद्घाटन हमारे स्कूल की ज्येष्ठ और मुख्य शिक्षिका श्रीमती सुचित्रा मैडम इनके शुभ हाथों से करने जा रहे हैं. इसीलिए मैं आपसे अनुमति और आपका दोनों का आशीर्वाद मांगता हूं और हमारी मुख्य शिक्षिका सुचित्रा कांबळे मैडम जी को मैं विनती करता हूं कि वो अपने शुभ कर कमलों से इसका अनावरण करे. ऐसे में हमारी ज्येष्ठ शिक्षिका को विनती करता हूं. मेरी भावना आपके साथ है. कांबळे मैडम, मेरी भावना आपके साथ है. धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच.
इस हस्त पुस्तिका में बच्चों ने सर जी बहुत सुंदर सुंदर लेख लिखे हैं, सुंदर सुंदर स्वरचित कविताएं लिखी है, प्राकृतिक भूगोल के बारे में लिखा है, अपने नेशनल हीरोज के बारे में लिखा है और बच्चों द्वारा बनाए गए सुंदर सुंदर चित्रों का इसमें इन सबको इकट्ठा हमने इसमें किया है और इसका अनावरण अभी होने जा रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे प्रिंसिपल साहिबा ने अपने हाथों से बनाए ये जो चित्र है, गणपति का चित्र है, गौतम बुद्ध जी का चित्र है और सुंदर सुंदर रचनाएं हमारे प्रिंसिपल साहिबा मैम ने तैयार की है, वो भी उसमें हमने उनको भी ऐड किया है। बहुत सुंदर तरीके से हस्त पुस्तिका बनाई गई है। आपके आशीर्वाद से और हमारे प्रिंसिपल साहिबा के आशीर्वाद से यह सब कुछ संभव हो पाया है। आपके आशीर्वाद और दुआ, आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन हमें ऐसा ही मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हस्त पुस्तिका का अनावरण हो गया है। Congratulations. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। हस्त पुस्तिका का नाम हमने इंद्रधनुष्य लिखा है। त्या पुस्तक आम्हाला दाखवा ना स्क्रीनवर. हाँ सर, मॅडम जरा पुढे येऊन दाखवा ना. इंद्रधनुष. Science explains how you get a rainbow. ये हमारे प्रिंसिपल मैडम द्वारा बनाया गया चित्र है सर, जो उन्होंने अभी ताजा ताजा बनाया है। Very good. ये भी हमारे प्रिंसिपल मैम की कलाकृति है। Very nice, very nice. अगले टाइम सरस्वती का बनाइए। ये बच्चों ने बनाया है सर। वेरी गुड। बहुत ढेर सारे लेख इसमें लिखे गए हैं, कविता लिखी गई है। It's good that you are bringing out their creativity. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर जी, आपका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे, यही हम मनोकामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं दक्षाबेन, तुमचा आशीर्वाद आणि मार्गदर्शन आम्हाला असंच मिळत राहो ही अपेक्षा। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है मैडम, आ रही है। और हमारे मेहमान सभी ने हमें आशीर्वाद दिए हैं। हमारा कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से सफल हो रहा है। धन्यवाद सुचित्रा जी, धन्यवाद अवर सर, सभी को धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं। कल कक्षा 7वीं और कक्षा 9वीं के प्रकल्पों का ऑनलाइन परीक्षण किया गया। उनमें से परीक्षकों ने चुने हुए प्रकल्प और उन छात्रों के सफलता प्राप्त सम्मान में पारितोषिक वितरण समारंभ होने जा रहा है। सारे नन्हे छात्र वैज्ञानिक जिस क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वह क्षण समीप आ चुका है। इसलिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी पाठशाला की श्रीमती अर्चना खारगे जी को और साथ में श्री मुंडे सर विजयी स्पर्धकों के प्रमाण पत्र पीपीटी के माध्यम से और ट्रॉफी पीपीटी श्रीमती परम पूज्य ताराताई के प्रतिमा को कोटि कोटि वंदन और सभी मान्यवरों को प्रणाम। आज के इस परम पूज्य ताराबाई मोडक बाल वैज्ञानिक पारितोषिक वितरण समारोह में जो स्पर्धक विजयी हुए हैं, उन्हें आदरणीय श्रीमान कर्नल तुषार तिवारी जी की ओर से ट्रॉफी दी जा रही है। मनुष्य चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, उसे कभी ना कभी एक मार्गदर्शक की आवश्यकता जरूर पड़ती है और आपका मार्गदर्शक ही आपका शिक्षक और गुरु है। जहाँ प्रतियोगिता है वहाँ कोई जीतेगा ही, और यदि कोई जीत रहा है तो किसी का हारना भी निश्चित है। हार जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हो सकती है,
लेकिन हार क्षणिक है और हौसला निरंतर है। इसलिए आज से आप सारे छात्र जिस कार्यक्रम की बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो पारितोषिक वितरण समारोह अब शुरू होने जा रहा है। यशस्वी विजयी स्पर्धकों के नाम इस तरह है: कक्षा 7वीं जूनियर ग्रुप, सानवी खेडेकर, मार्गदर्शक शिक्षक नेहा मोरे, पाठशाला कॉस्मोस हाई स्कूल। और ब्लॉग चैनल पे 1 लाख हो गए हैं, तो प्लीज वहां पे भी सपोर्ट कर लेना। चलो, तृतीय क्रमांक गार्गी कुलकर्णी, मार्गदर्शक शिक्षक सरगरे विजया, पाठशाला IES दिगंबर पाटकर विद्यालय। सारे बच्चे तालियां बजाएंगे और विजया को अभिनंदन करेगा। और द्वितीय क्रमांक ध्रुव खारवी, मार्गदर्शक शिक्षक विदेश राय और ममता, पाठशाला शेठ गोपाल जी हिमराज हाई स्कूल। और प्रथम क्रमांक कुमारी वैष्णवी बुरवाडकर, मार्गदर्शक शिक्षक निर्मला पाडाळकर, पाठशाला शिशुविहार माध्यमिक विद्या मंदिर। हमारी पाठशाला की शिक्षिका अपना परिचय दे। क्या कर दिया तूने, क्या कर मेरे पे? कक्षा 9 सीनियर ग्रुप, उत्तेजनार्थ महाडिक अनुज संजय, मार्गदर्शक शिक्षक ऋतुजा नाडकर, पाठशाला शारदा विद्या मंदिर, शारदाश्रम विद्या मंदिर। तृतीय क्रमांक शेलार अभिजीत प्रभाकर, मार्गदर्शक शिक्षक उषा कदम, पाठशाला GS हाई स्कूल। तृतीय क्रमांक शाह विवेक धवल, मार्गदर्शक शिक्षक उषा कदम, पाठशाला GS हाई स्कूल। और प्रथम क्रमांक जीतकर अनुज राजेश, मार्गदर्शक शिक्षक जागृती अहिरे, पाठशाला KMS शिरोडकर हाई स्कूल। सभी पारितोषिक विजेते छात्रों का हमारी ओर से मनपूर्वक अभिनंदन और ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Daksha ji, can I withdraw? Hello. Just Yes, we sir. learned that Yes, sir. these trophies are sponsored by the Tiwari family. So it is very important to know about Colonel Tushar Tiwari. Colonel Tushar Tiwari was born on 15th May 1917 to Colonel R.K. Tiwari and Mrs. Madhu Tiwari. From an early age, he was very interested in science and electronics, an extremely sharp person with high intelligence quotient. In the school, he always stood first in his class and forever excelling in mathematics and science. All students look up to him and he remained a tutor and mentor to most even at such an early age. His passion for science can be gauged by the fact that he won awards and accolades in science subjects during his training in National Defense Academy as well. Even after commissioning in the army, he completed his engineering and excelled in all courses he attended. He was selected and trained on such military equipment in the army, which only a very few were allotted in handle. Thank you, Tiwari family. Thank you very much.
नहीं ऐसे नहीं सर्दी में धन्यवाद अर्चना जी, धन्यवाद मुग्धा जी, धन्यवाद मुंडे सर। सफलता प्राप्त छात्रों का पुनश्च अभिनंदन। लेकिन आज इस प्रतियोगिता में जो छात्र सफल न हो पाए, उन्होंने ये समझना है कि मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। इसीलिए असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। इसे पार करो और आगे बढ़ो और सफलता के लक्ष्य को हासिल करो। धन्यवाद। Can I withdraw now? Can Yes, I? sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Thank okay, you sir. very much, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Best wishes. ओके। आज जमा हुआ जनसमुदाय मंच पर अतिथि आए, मानो आज त्योहार है। आप सभी का दिल से आभार, दिल से आभार। इसी कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी पाठशाला की ज्येष्ठ शिक्षिका श्रीमती सुचित्रा कांबळे जी। श्रीमती सुचित्रा कांबळे जी। Thank you, निर्मला मैडम. Thank you, निर्मला बेन. परम पूज्य ताराताई. सुचित्रा आवाज कमी येतो बेटा. परम पूज्य ताराताई को शत शत नमन करते हुए मैं आभार प्रदर्शन का कार्य शुरू करती हूँ. A graceful and warm morning to all our most valued guests, Padmabhushan Professor M.M. Sharma sir, and our principal Daksha madam, management committee, and all our worthy teachers and most valued children. It is my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. On behalf of Principal Daksha madam and Shishu Vihar Mandal, I extend my most sincere thanks to the most valued Padmabhushan Professor M.M. Sharma. Professor M.M. Sharma, and he gave us a most useful guidance for our children. And he inspired our children to become a scientist in future, because science is a life and science is a solution to solve problems. I offer a special thanks to the Srimati Bhavna Patel, and she has connected with today's chief guest, Professor M.M. Sharma. Bhavna madam, तुमचे खूप खूप आभार, आम्ही तुमचे खूप आभारी आहोत. And Mr. Aditya, who shared his Zoom app with us to make our program successful. Mrs. Shimnekar madam, National Award winner for Best Teacher, and Dr. Shimnekar sir, they always guiding us to conduct this program very successfully, and throughout from the first year till the 10th year, he is always guiding us how to prepare our children through such a कृति संशोधन करने के लिए वो हमेशा हमें गाइड करते रहते हैं. और सर शिवनेकर मैडम, तुमचे खूप खूप धन्यवाद. Then I extend my thanks to the convener Sujata madam, co-convener Mudha madam, because of whom we made this function program very effective. I am very much thankful to Munde sir, who handled the technical part of this program. Thank you, sir. I thank the wonderful student who participated in this program. I take this opportunity to extend my sincere thanks to all the judges. Dear students, always remember, do not give up until you achieve your dreams, and dreams big. Success is only those who work hard. I extend my heartfelt thanks to the guest of honor again, Professor M.M. Sharma, Principal Daksha madam, all management committee, and all valued personalities who have attended this program, participants and their guide teachers. I give thanks to the chorus sir for melodious welcome song, and same again I offer thanks to Chinmay Mission, who helped our children to work hard, and Kutumba Dhaval madam, who helped us to conduct this program very successfully, and Hemal Shah madam. We are
very thankful to you. You are you gave us a strong support and cooperation, and we are, I think, in future also we hope the same thing from you. And last but not least, I'm giving thanks to all teaching and non-teaching staff, gave us a valuable contribution to conduct this program very successful. And thank you, Sharma sir, you attended this program, and Daksha madam, we are doing our best to conduct this program. Thank you, madam. Thank you very much. Thank you, Suchitra madam. Thank you everyone. थैंक यू, स्पेशल थैंक्स टू तिवारी फैमिली जिन्होंने हमें आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए, तुषार भाई की तरफ से हमें जो बच्चे लोग को ट्रॉफी दी है उसके लिए तहे दिल से हम उनका शुक्रिया करते हैं। मंजुला आंटी थैंक यू वेरी मच, स्वाति मैडम थैंक यू वेरी मच, आपने ये कार्यक्रम आके हमारा कार्यक्रम का और चार चांद बढ़ा दिया, ऐसा हम बताएंगे तो हरकत नहीं है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। Thank you, madam. We are really very thankful to all of you who attended this program. And so we are getting charged up to do the next day the same program with the same energy. Thank you, madam. Just want to say thank you for inviting always, because I feel the school is doing very well. मतलब शब्द नहीं है स्कूल के लिए, स्कूल के स्टाफ के लिए और स्कूल के बच्चों के लिए। जिस डेडिकेशन से उन लोग करते हैं ना, तो हमको लगता है नहीं, हाँ हम भी छोटे स्कूल के छोटी पार्ट बने उस स्कूल का, जितना हो सके। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी एंड शेयरिंग दिस प्रोग्राम लिंक विथ मी। थैंक्स दक्षा मैडम एंड थैंक्स ऑल द स्टाफ एंड थैंक्स आई हैड ग्रेट मतलब मुझे इतना अच्छा लगा MM शर्मा सर को सुन के, शिवनेकर सर को सुन के, हमको मतलब हम कुछ नहीं है, दे आर वेरी they are above the, like, you know, what they are doing is very nice. Thank you very much, sir. Thank you very much, madam. Thank you, Daksha madam. Thank you, Suchitra madam. Okay. अभी कार्यक्रम का आखिरी में हम हैं। आज के इस कार्यक्रम का समापन पसायदान से होने जा रहा है, इसीलिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी पाठशाला के संगीत शिक्षक श्री कोरे सर इन्हें। साउंड म्यूट है सर, सुधीर सर साउंड म्यूट है, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। Krishna
चंद्रमेचे अलांछना मातंडसे तापहीना ते सर्वांनी सदा सज्जन सोयरे किंबहुना सर्वसुखी पूर्णहोमि निखिलोमि भजितो आदिपुरुषी अखंडिनी आणि ग्रंथोपजीविये विशेषे लोकीये दृष्टविषये मॅडम काय सूचना सांगायची का? नाही सर, छान झालं. थँक्यू व्हेरी मच. आणि सर्वांनी खूप खूप सहकार्य केलं त्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद सुचित्रा मॅडम तर्फे आणि माझ्यातर्फेही. आणि असं सहकार्य पुढेही ठेवा. हेमल मॅडम, थँक्यू व्हेरी मच. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मुंडे सर. अरे मैडम है, मैडम चिंता मत करो, आप कभी भी आपका स्कूल है, आओ जाओ. वो तो मेरे को ना नहीं कोई भी इतना कंट्रीब्यूशन हमें मिलता है आपका. हम तो चाहते हैं कि आप हर एक वीक में या महीने में तो कम से कम आया करो. पक्का करूंगी, अभी करूंगी पक्का. यस मैम, यू आर वेलकम. ओके, थैंक यू. थैंक यू मैम. बाय. थँक्यू हेमल. मॅडम लिंक बंद केली चालेल का? हो, खाली आदित्यला सांगून द्या ज्यांना करून आपल्याला प्रॉब्लेम येणार. ते टेप चालू आहे त्याच्या, मी त्यांच्याशी बोलणं झाला होता माझा. कडव कुठे आहे? आवाज मुंडे सर. मॅडम काय? नाही, कडव कडव कडव. चला, अभिनंदन कडव, छान कार्यक्रम तुझा झाला आजचा. चला सुचित्रा, व्हेरी गुड, छान झाला कार्यक्रम. थँक्यू बेन. थँक्यू बेटा. सॉरी मॅडम, काय काय चुका केल्यात आम्ही थोड्या. नाही, हरकत नाही. तरी माझ्याशी होत होतं तसं मी सांगत होती. पुढच्या वेळेस नो प्रॉब्लेम. त्यामुळे फिनिशिंग आलं, तुम्ही मध्ये मध्ये इन्स्ट्रक्शन देत होता, त्यामुळे छान झालं. छान झाला कार्यक्रम. पुढच्या वर्षी 9वी आणि 7वी दोन्ही मध्ये जिंकायला पाहिजे. येस सुचित्रा, तू सिनियर टीचर आहे म्हणजे येस म्हणजे व्हायलाच पाहिजे. येस पण डेफिनेटली 101%. थँक्यू. थँक्यू शिवणकर सर, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू मॅडम. चला, काळजी घ्या सर्वांनी. मॅडम बघताय का बेन, तेव्हा तुम्ही अभिनंदन केलं मला कळलं नाही. समजलं ना. खापेकर कडून आपण पार्टी घ्यायची आहे. मॅडम तुमच्यातर्फे मी तिची पाठ थापटवली. थँक्यू थँक्यू. छान छान झाला कार्यक्रम. अर्चनाने प्रयत्न चांगला केला. मॅडम लवकर जॉईन करा आम्हाला.